Assalamu alaikum viewers. Welcome to Nova Educational Academy Ladkano. This is Imran Sodar, lecturer in physics, Government Degree College, Ladkana. Dear students, yesterday we discussed about the topic error, the types of error. Today we are going to start the last topic of the chapter number 1, class metric, the contributions of Muslim scientists. Muslim, as we know that Islam is a religion of peace. When we go through the annals of history of Muslims, it is clear that Islam promotes knowledge and education. We have a many evidence in which there is a clearly defined that how Islam spreads knowledge, education, and wisdom. Even the first revelation in the Holy Quran was Ikra Bismi Rabbika Lazi Khalaq. Ikra means read, pad. Hadith from the Holy Prophet, peace be upon him, quest knowledge from cradle to grave. Ilim ilim pinge khan kabar ताईं पिरायो. हिक ॿी हदीस में इहो बि आहे त इल्मु हासिल करण जे लाइ चाहे तव्हांखे चाइना वञिणो पए तॾहिं चाइना तव्हां घणो दूर हूंदो तंहिंजे करे ॿी बि हदीस इहा आहे त हाणे इन हदीसनि में इन आयत सॻोरनि में असांखे इहो वाज़े पैगाम आहे त इस्लाम केतिरो एजुकेशन खे तरजीह ॾिए थो. उन खां बाद में जीअं ई फोर पायस कैलिफ्स जी हुकूमत उन खां बाद में उमैया जो दौर आहे 90 सालनि जो ऑलमोस्ट देन अबेसिड्स पीरियड स्टार्ट थिए थो तक़रीबन 786 खां. हाणे इन अबेसिड्स पीरियड में जेका साइंस कल्चर फिलॉसफी जेतिरी तरक़ी कई शायदि कंहिं बि क़ौम एतिरी कोन कई जेतिरी मुस्लमाननि तरक़ी कई इन दौर में. छो त at that time Baghdad was the center of learning and knowledge. Abbasids caliphate में जेके कैलिफ हुया कैलिफ अल मामून कैलिफ हारून रशीद कैलिफ मंसूर काफ़ी ॿिया बि अहिड़ा कैलिफ्स आहिनि जंहिं तमामु घणो तालीम खे तरजीह ॾिनी. उन्हनि जो प्रोजेक्ट इहो हुयो त जेकी बि दुनिया जा आलिम हुया उन्हनि खे बाक़ाइदा सुठी तरह सां इनवाइट कयो वियो त अचो तव्हां जेको बि कमु आहे साइंस में उन जो तर्जुमो कयो. इवन तारीख़ में इहो बि लिखियलु आहे त उन्हनि लेखकनि खे उन्हनि आलिमनि खे उन्हनि मुफ़क्किरनि खे हुकूमत कैलिफेट जे तरफ़ खां रिवॉर्ड हूंदो हुयो त जेतिरो तव्हां ट्रांसलेट कयो था उन जे बदिले जेतिरो बुक तव्हां ट्रांसलेट कयो था उन जो हिकु पासे वज़न रखो ॿिए पासे तव्हां सोन रखो एतिरो उन्हनि खे रिवॉर्ड कयो वेंदो. इन जो मतिलबु आहे त केतिरो हू सीरियस हूंदा हुया उन एजुकेशन नॉलेज खे. जीअं कैलिफ हारून रशीद जो ठाहियलु बैतुल हिकमा जंहिंखे हाउस ऑफ विज़डम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हुआ जिते एवरी स्कॉलर्स पूरी दुनिया जा जेके स्कॉलर्स उन्हनि जो ख्वाबु हूंदो हो टू जॉइन द बगदाद अकेडमी. सो it was again the just somehow the overview of the Muslims contribution. So however the contribution of Muslim scientists, as we know that all these Muslims, the scientists are the production of these caliphate. उन्हनि जी प्रोडक्शन बगदाद अकेडमी इहो जेको बगदाद मां जेके पढ़ी आया उहे सभई जेके मुस्लमान के साइंसदान के फिलासफ़र थिया के फिज़िस्ट थिया के एस्ट्रोनॉमर थिया त उन्हनि जो तक़रीबन तालुक़ु जेको आहे त इन्हनि सां ई आहे. हाणे
असां हलूं था अॻिते असांखे डिस्कस करणा आहिनि कुझु साइंटिस्ट 5 साइंटिस्ट असां हिन में डिस्कस कंदासीं जंहिंमें पहिरें नंबर ते असां साइंटिस्ट आहे अबू अली हसन इब्न अल हेथम मतिलबु इब्न अल हेथम जे नाले सां मशहूरु आहे इब्न अल हेथम was born in 965 965 में इब्न अल हेथम क्या हुयो he was died in 1039 AD Ibn al-Haytham known as al-Hazan in the West West वारा Ibn al-Haytham खे al-Hazan जे नाले सां सॾींदा आहिनि he was born in Basra the city in Iraq he was a great scholar of physics mathematics engineering astronomy and medicine look at the different fields in which he was so expert and scholar famous book on optics किताब अल मनाज़िर इब्न अल हेथम खे जेकॾहिं ईअं चयो वञे त ही वॉज़ द फादर ऑफ ऑप्टिक्स त ग़लति न थींदो ऐं वाक़ई तारीख़ में हिनखे फादर ऑफ ऑप्टिक्स ई चयो वियो आहे इब्न अल हेथम खे छो त हिन जूं जेके इन्वेंशन्स आहिनि काफ़ी अहिड़ियूं आहिनि जेके स्टार्ट में कंहिं बि साइंसदान उन्हनि खे टच न कयो पर हिन इब्न अल हेथम उहे जेके क्वांटिटीज़ आहिनि जेके डिफरेंट फिनोमिना आहिनि ऑब्ज़र्व कयूं ऐं डिस्कवर कयूं ही डिस्कवर द नेचर ऑफ लाइट उन वक़्तु कंहिंखे ख़बर बि न हूंदी त लाइट इवन आहे छा व्हाट इज़ द लाइट इब्न अल हेथम उन जी नेचर डिटरमाइन कई त व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही इन्वेंटेड पिन होल कैमरा famous remarkable achievement of Ibn al-Haytham was pinhole camera जंहिंजे थ्रू he obtained image of sun eclipse जेके सिज ग्रहण थींदी आहे कीअं सिस्टम थींदो आहे हिन साइंटिफिकली बुनियाद ते हिन उन उहो इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट कयो उन बेसिस ते उन सन इक्लिप्स जा इमेज वरिता उन मां साइंटिफिकली ॿुधायो त सन इक्लिप्स कीअं थींदी आहे छा थींदो आहे This is a figure of Ibn al-Haytham and however this is a lattice pinhole camera. In ancient time there was a different shape of pinhole camera. He gave the laws of reflection and reflection the last in reflection छा आहे reflection हिकु अहिड़ी phenomena आहे जंहिंमें wave bounce थींदी आहे bounce back from the medium उन bouncing back खे असां reflection चवंदा आहियूं उन जा वरी types थींदा आहिनि regular reflection irregular reflection and so on He also explained the refraction of light. What is a refraction? When light passes through one medium to another medium, it changes its path. That is known as a refraction. Other books, along with the Kitab al-Manazir, Manazir means optics, Mizanul Hikmah, configuration of the universe. So, next scientist is Yaqub ibn Ishaq al-Kindi. He was born in 800 and he was died in 873. Yaqub al-Kindi was born in Basra. He was a great physicist, musician, known as Al-Kinduz in the West. He wrote 265 monographs on meteorology, specific gravity, tides, sound, and optics. Because he was a musician, that's why he has a great contribution in the field of the sound and optics. He explained musical notes on scientific grounds. He was a man of diverse nature, did his work in different fields. That's why he was a versatile scientist. His important treatises are number 1 is De Aspectibus. So this is just overview of Al-Kindi. He was a great physicist, musician. Monograph, mono means single, graph means articles. These different articles, he wrote different articles, at least more than 265 monographs he wrote. He explained musical notes. So this is all about the 2 scientists. Again the 3 scientists are remaining. The third scientist is Al-Biruni. The 4th scientist is Dr. Abdul Salam. And the 5th scientist is Dr. Abdul Qadir Khan. And the remaining 3 scientists will be discussed in the next lecture. Thank you so much.